हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग ग्रुप थ्योरी चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी टाइप का होगा। हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रुप तक पहुंचते हैं, क्या जर्नी है ग्रुप तक पहुंचने का। मतलब ग्रुप ऐसे ही मतलब एकदम से ग्रुप थ्योरी आपके सामने पटक दें आप पढ़ाने लगे, वो अच्छा नहीं है। हम लोग देखा जाए कि किस तरह से हम लोग ग्रुप, जो कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम लोग ग्रुप तक पहुंचते हैं, हाउ वी रीच दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ग्रुप थ्योरी पढ़ें और ग्रुप के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। मतलब हम बार बार बोल रहे हैं ना कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ग्रुप एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ऐसे रिंग एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही वेक्टर स्पेस एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो पहले तो देखा जाए कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स क्या होता है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस का बात करेंगे। ठीक है, एंड वी टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड हाउ वी रीच द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ग्रुप। ठीक है, तो let's start with this. Let's talk about what is algebraic structure, what is binary operation. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं एंड देन विल गो अहेड। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और कई बच्चे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम फेस इसलिए करते हैं कि दिमाग में कहीं बसा लेते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत नॉन इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए कि आप कितना टाइम इस पे देते हैं। ये टॉपिक 10+2 लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल पे ही पढ़ाया जाता है। बाकी देखो कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाता है। ये टॉपिक ग्रेजुएशन में ही शुरू होता है, तो इसको अगर सही से टाइम देंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ें कि ये हमको करना है और एक अच्छा टॉपिक है। पहले बात तो इसका मतलब एक क्या है, परसेप्शन है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ टॉपिक, वेरी एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ टॉपिक, नॉन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ। तो ये परसेप्शन आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी पूर्वाग्रह से इसको मत पढ़िए, कोई प्रेजुडिस माइंड से मत पढ़िए। ट्राई टू टेक इट एज ए टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वली गुड, इक्वली इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एटीट्यूड लेकर स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंड थिंग्स आर ईजी, और बल्कि ये रिवार्डिंग है। ठीक है, ये ज़्यादा रिवार्डिंग है क्योंकि इसके क्वेश्चंस यूजुअली मतलब जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, कंपेयर टू द क्वेश्चन विच यू डू इन कैलकुलस, उसमें तो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ये तो क्वेश्चन जल्दी आपका हो जाएगा बल्कि। ठीक है, मतलब आता रहेगा तो इसको करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक ऑफ ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का टॉपिक बिगिन करते हैं हम लोग। ऑलराइट, इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस। तो प्रेटी गुड टॉपिक। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है, and we'll talk about geometrical aspect also in this whole subject, group theory. ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि ग्रुप थ्योरी जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले आप लीनियर अलजेब्रा जरूर पढ़ना। जो भी ग्रुप थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट यू डू लीनियर अलजेब्रा। कि बहुत सारा जो एग्जाम्पल्स आता है वो मैट्रिसेस इन्वॉल्व करता है, तो आपको मैट्रिसेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यू शुड बी गुड एट लीनियर अलजेब्रा। Linear algebra is going to help you a lot in group theory. ठीक है, तो ठीक है, तो let's see. Let's talk about the very first and very basic thing in group theory, that is algebraic structure. एक्चुअली इसमें हम लोग अलग अलग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ग्रुप इज वन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। लेट S be a non-empty sets
let S be a non-empty set and star is a binary operation, right? Then S equipped with the star is called algebraic structure. Algebraic structure. Or in a very simple word I can say, or you can say simply any non-empty set S equipped with one or more binary operation is called algebraic structure. Any non-empty set S equipped with one or more binary operation is called algebraic structure. For example, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन. तो पहले तो ये आपको हम बता दें कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, पहले तो ये समझने का जरूरत पड़ेगा आपको. व्हाट इज मीन्ड बाय दिस बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एनी नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ वन और मोर, एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है. यू कैन हैव मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन आल्सो, राइट. एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है. तो पहले तो ये समझो कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे ना. कोई भी ऐसा वर्ड छोड़ना नहीं है. जब भी कोई नया वर्ड आता है तो उसको डिस्कस करना है, उसको अच्छे से डिस्कस करना है. ठीक है, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं. ठीक है, आराम आराम से करेंगे, जल्दी में समझ में भी नहीं आएगा आपको. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है. व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, definition is let S be a non-empty set, let S be a non-empty set, then a binary operation, a operation, then star is a binary operation on set S if it maps any ordered pair of S to a unique element of S. देखो मैंने क्या लिखा है, इफ S इज ए नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आई एम टेकिंग ए एम्प्टी सेट वेयर यू डोंट हैव एनी एलिमेंट. जब कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो ऑपरेशन का बात ही नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट एनी ऑपरेशन S मस्ट बी नॉन एम्प्टी. S मस्ट बी नॉन एम्प्टी. ठीक है, उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स होने चाहिए ताकि उन पे ऑपरेशन का हम बात कर सकें. So S be a non-empty set, then star is set to a binary operation if it maps every ordered pair. If it maps every ordered pair, इसको any हटा के every कर दो. Every ordered pair of S to a unique element of S. देखो क्या हम बोल रहे हैं,
मैथमेटिकली इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि बाइनरी ऑपरेशन star on S is a rule or a map which maps every element of S cross S to S, ऐसे भी बोल सकते हो. Or you can say star is a rule which takes elements of S cross S to S. Right? Yes. So S cross S क्या है? S cross S is Cartesian product of S. It contains all the ordered pair of S. It contains all the ordered pair of S. S के सारे ordered pair को contain करता है. ठीक है. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है? बाइनरी ऑपरेशन maps every ordered pair, every element of S cross S. Element of S cross S is basically ordered pair. Ordered pair. ठीक है. It maps every ordered pair of S to a unique element in S. And set of all ordered pair is basically Cartesian product of S. आपको एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. आपको एग्जाम्पल देते हैं, अधिक क्लियर होगा. देखिए, सपोज योर S is set of natural numbers. S is set of natural numbers, right? And suppose the operation star is addition. Operation star is addition. तो addition किस पे ऑपरेट करता है? Addition operates on an ordered pair of the set of natural number. कोई भी ordered pair ले लीजिए, जैसे ordered pair on n will be what? 2, 3 is the ordered pair. ठीक है, 2, 3. कोई भी दो natural number ले लोगे, they forms an ordered pair. कोई भी दो natural number ले लेंगे, तो they forms an ordered pair. Plus क्या कर रहा है? Plus is acting on this ordered pair and giving you an element which is 2 plus 3. जैसे if n is set of natural numbers, so if I take any ordered pair of n, ordered pair of n means a set of two natural numbers. हमने natural number 2 और 3 लिया, 2, 3 इकट्ठे क्या बना रहा है? एक ordered pair बना रहा है. और addition क्या है? Addition is acting on this ordered pair. Addition is the operation of addition is acting on this ordered pair 2, 3 and it is giving me an element 2 plus 3. तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि plus is acting on this ordered pair. ऐसे कोई और element ले लो. If I take 3 and 4, any two natural number will form an ordered pair. ठीक है? Any two natural number will form an ordered pair. तो if I take a element 3 cross 3, 4, 3, of course देखो 3 और 4 जो है n को बिलोंग कर रहा है and 3, 4 is belonging to what? Is belonging to the Cartesian product of set of natural numbers. 3, 4 जो है it is belonging to n cross n. 3 and 4 belongs to n but 3, 4 belongs to n cross n. तो ये एलिमेंट किसका हो गया? 2, 3 is belonging to n क्रॉस n. और जो एडिशन ऑपरेशन इस पे एक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है आपको? एडिशन ऑपरेशन इज एक्टिंग ऑन 2, 3 एंड गिविंग यू 2 plus 3 which is 5. तो आप देखो you have a set which is a Cartesian product of n cross n, right? And you have the element set 2, 3 and you have another set which is set of natural number. So the addition operation is doing what? It's a rule which is assigning every ordered pair of natural number to, which is assigning every ordered pair of the natural number set a unique element in n, which is 5. Right? And the operation is what? Operation is addition. Operation is addition, right? So this is binary operation. Binary operation is a map from S cross S to S.
बाइनरी ऑपरेशन इज अ मैप और ए फंक्शन और ए ऑपरेशन और ए रूल, ठीक है, इट्स अ रूल फ्रॉम विच टेक्स एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n टू n. So plus is a binary operation set of natural numbers. प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और इसको थोड़ा सा हम इजी भाषा में आपको बताते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है. सपोज यू हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, से a general set S. It contains lots of element. It contains lots of element, right? It contains lots of element. कम भी element हो सकता है. You can have less element also. No need of lots of elements. Suppose it contains some elements. It's a non-empty set. Of course, it has to be non-empty set. ठीक. Then I can say that plus is a binary operation in this set. Plus is a binary operation in this set if I pick any two element of this S. हम लोग इस सेट के किसी भी दो एलिमेंट को निकालते हैं, कोई भी दो एलिमेंट चूज करते हैं और उनको जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो अगर इसी S के अंदर लाई करता है तो हम कह सकते हैं कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन S. मतलब हमने एक नॉन एम्प्टी सेट S ले लिया. S कैन बी ए नेचुरल नंबर सेट से. In general, if I say S is a natural number set, then a set of natural number, for a set of natural number, addition is a binary operation if I pick any two elements from the set of natural number and add them, then if after addition जो element हमारे पास आ रहा है अगर वो n को बिलोंग करता है उस केस में हम प्लस को हम बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं. तो हम लोग देख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स are the numbers made by God. So there is 1, 2, 3, 4 and so on. तो कोई भी दो एलिमेंट आप पिक करो उनको जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा. कोई भी दो एलिमेंट पिक करोगे और उनको जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा. ठीक है. सो आई कैन डेफिनेटली से दैट प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. और इसको इन अदर वर्ड्स भी से कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन. If plus is a binary operation set of natural number, we also say that the set of natural number is closed with respect to the operation of addition. इसको हम लोग closure property भी बोलते हैं. So the operation, binary operation leads to a property called closure property. Closure property. Closure property का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट चूज कर रहे हो उनको ऐड कर रहे हो and if you are getting the same element then we say the set S is closed with respect to operation of addition. अच्छा, इसको इन जनरल ऐसे बात करते हैं. पॉज प्लस तो एक बाइनरी ऑपरेशन स्पेशल बाइनरी मतलब एक एग्जांपल हो गया ना बाइनरी ऑपरेशन का. बाइनरी ऑपरेशन तो एक से अधिक हो सकता है. तो इन जनरल हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन देन if I pick any two element from S, if I pick any two element of S and then I do this operation on these two element, मतलब addition एक ऑपरेशन हो गया. there can be other operation also. so in general हम लोग बात करते हैं कि star is a binary operation. for star is set to a binary operation if I pick any two element from this S and do this star operation, then it gives me what? It gives me A star B. So if this also belongs to S, then we say star is a binary operation. स्टार के जगह पे आप प्लस पुट कर लो और ए बी कैन बी ए नेचुरल नंबर. तो एक एग्जांपल आ गया आपका. समझ रहे हैं आप. स्टार इसलिए हम लोग देखो ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई एस इज सेट टू बाइनरी ऑपरेशन इफ आई पिक एनी टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस एस. सो सेट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर इज एस क्रॉस एस. सो इससे बाइनरी इसे मैप फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस. प्लस जो है एक नंबर पे एक्ट नहीं कर सकता ना. प्लस तो दो नंबर पे एक्ट करेगा. प्लस विल एक्ट ऑन सम जो एडिशन है उसके लिए दो नंबर्स चाहिए. यू कैनॉट हैव ऑपरेशन ऑफ एडिशन सिंगल नंबर. यू कैनॉट हैव ऑपरेशन ऑफ एडिशन सिंगल नंबर. नो, फॉर बाइनरी ऑपरेशन यू नीड टू नंबर्स, टू एलिमेंट्स ऑफ एस. you need two elements of S. So if I make a set of all the possible two elements of S, two elements of S together is called ordered pair. Two elements of S together is called ordered pair. उसको ordered pair बोलते हैं हम लोग. Two element of S together
फॉर्म से ऑर्डर्ड पे, ऑर्डर्ड वर्ड यूज क्यों करते हैं? अगर द एलिमेंट 3 4 and 4 3 is different, element 2 4 and 4 3 2 3 4 and 4 3 फॉर्म्स डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कई बार क्या है ना कि एडिशन जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब यू मे हैव ए केस वेयर ए स्टार बी मे नॉट बी बी स्टार ए, राइट? सो इन दैट केस the element a b and b a is not same element, इसलिए हम लोग ऑर्डर्ड पे, the way you write them, the order in which you write them, राइट? अगर 3 और 4 है तो 3 4 लिखे और 4 3 लिखे, तो ये दो अलग अलग एलिमेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो हम लोग इसलिए ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, बिकॉज नॉट जस्ट एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर इन विच यू राइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। So if you pick two elements 3 and 4, then you write 3 comma 4 or 4 comma 3, they form different element. तो इसलिए हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। सिर्फ पेयर बोलेंगे then 3 4 and 4 3 will mean same element. No, 3 4 and 4 3 are different element because they differ where? They differ in the order in which they are written. इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो फिर समझिए चीजों को, बाइनरी ऑपरेशन का अगर बात करना है तो बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज एक्ट ऑन टू नंबर्स, टू एलिमेंट्स, राइट? टू एलिमेंट्स। तो अगर हम बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग अगर बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन करेंगे, तो अगर बाइनरी ऑपरेशन एक्ट करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन एक एलिमेंट पे एक्ट नहीं करेगा, हमेशा वो दो एलिमेंट पे एक्ट करेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एडिशन है, तो एडिशन नेवर एक्ट्स ऑन सिंगल नेचुरल नंबर, एडिशन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू नेचुरल नंबर्स। So in order to define binary operation, in order to do this binary operation, you have to pick two numbers, two elements of S, and set of all the two elements, right? The two elements written in a particular order, we'll call it ordered pair. So set of all the ordered pair of S forms a set of all the ordered pair, we call it Cartesian product. Cartesian product क्या आता है? Set of all the ordered pair, set of all the ordered pair forms a Cartesian product, Cartesian product, ठीक है? Set of all the ordered pair forms a Cartesian product. तो एक तरह से जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन वो क्या कर रहा है, ये S क्रॉस S के जो एलिमेंट को मैप कर रहा है S के एलिमेंट पे। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है? बाइनरी ऑपरेशन जो है it is mapping the element of S cross S. Element of S cross S क्या है? Element of S cross S is basically the ordered pair of the elements of S. Element of S cross S is basically ordered pair of the element of S. जैसे यहाँ देखिए N cross N, N cross N क्या contain कर रहा है? N cross N is containing the set of ordered pair. It is containing all the ordered pair of the elements of N. It's containing 2, 3, 1, 2, 0 का 0 तो है नहीं, ठीक है? इट कंटेन्स है 5, 4, इट कंटेन्स 4, 5, ऑल द जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, आप बस दो नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है? अच्छा, दो नेचुरल नंबर लोगे तो अलग अलग ऑर्डर में लिखो तो अलग अलग एलिमेंट बनेगा। जैसे दो नेचुरल नंबर 4 और 5 लिया तो 5 4 लिखा है, एक अलग एलिमेंट बनेगा, 4 5 एक अलग एलिमेंट बनेगा। इसलिए हम लोग बार बार ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का तो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर को एक सेट में रख दो एंड वी कॉल दैट सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन। तो एडिशन क्या कर रहा है? एडिशन इन सभी ऑर्डर्ड पेयर को, जैसे 2, 3 को मैप किया 5 पे, 5, 4 को कहाँ मैप करेगा? इट इज मैपिंग ऑन 9। इट इज मैपिंग 1, 2 एट 3। तो ये n क्रॉस n के जो ऑर्डर पेयर हो गया, दे बिलोंग टू n क्रॉस n। तो एडिशन क्या कर रहा है? एडिशन इज मैपिंग एवरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, इज मैपिंग एवरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n टू सम एलिमेंट इन n। इट इज मैपिंग टू नॉट सम, टू ए यूनिक एलिमेंट इन n। इट इज मैपिंग एवरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n टू ए यूनिक एलिमेंट इन n, ठीक है? टू ए यूनिक एलिमेंट इन n। ये जरूरी होता है, मैप तभी कर सकते हैं, फंक्शन तभी कर सकते हैं। यू कैन नॉट हैव ए सिंगल एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n गेटिंग मैप टू 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ n, देन इट्स नॉट ए फंक्शन इवन। ये मैप भी नहीं कहलाएगा। मैप का एक प्रॉपर्टी ही यही होता है, फंक्शन का प्रॉपर्टी यही होता है कि वो
डोमेन के एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट पे जाके मैप करेगा। सो इट इज मैपिंग, ये क्या कर रहा है, इज मैपिंग द एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n टू ए यूनिक एलिमेंट इन n। तो इसको ना बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इसको जनरलाइज कर देंगे, देन वी विल से, अगर इसको जनरलाइज कर देंगे देन वी विल से कि ये तो हमने ये ले लिया ना, आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया ना। इन जनरल अगर बात करेंगे तो इन जनरल बात करेंगे तो कहेंगे यू हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एस। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एस क्या है, मान लो एस में एलिमेंट है से ए बी सी डी, कुछ एलिमेंट्स है। These elements can be anything. These elements may not be a number only. These elements can be matrices also. These elements can be a vector also. ठीक है, मतलब सेट के एलिमेंट जरूरी नहीं कि नंबर्स हों, ठीक है। इट कैन बी से matrices also. It can be say functions also. Set of functions also. You know, set of functions also. Set of some operators also. Set of vectors. So it can be any object. ठीक है, जिसपे हम लोग किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। इट वॉन्ट बी ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग हो सकता है, लेकिन देन ऑपरेशन वॉन्ट बी डिफाइंड। यू कैन नॉट ऐड वन ह्यूमन बीइंग टू अदर ह्यूमन बीइंग, राइट। और मे हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन एक्टिंग ऑन ह्यूमन बीइंग। एनीवे, तो it's a set of some elements, right? Set of some elements. जी यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ सेट वेयर वी कैन डू सम ऑपरेशन ऑन द एलिमेंट्स, राइट। सो ए बी सी नीड नॉट बी अ नंबर। तो इफ आई डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन, देन बाइनरी ऑपरेशन इज समथिंग विच मैप्स द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ S and set of all the ordered pair will form क्या? It will form a set called Cartesian product of S. Cartesian product of S. So star is something which is mapping the ordered pair of S, and ordered pair of S, all the ordered pair forms a set called S cross S. So it's mapping every element of S cross S to a unique element of S. So it will map B comma C to an element called B star C. B star C can be element say D, it can be D, it can be E, it can be anything, right? It's mapping A comma B to an element A star B, right? A star B, B star C. So there must be element belonging to S basically. There must be an element belonging to S. So these are operator जब ये act करेगा तो ये जो element देगा वो S को belong करना चाहिए। जैसे for example, if I take a set of natural number and I take an operation of minus, then minus will not be a binary operation. Why? Because if I take an element 2 comma 3 and I do the minus operation on 2 comma 3, so minus operation 2 comma 3 is what? 2 minus 3. So 2 minus 3 does not belong to n. जैसे I can say प्लस तो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया ना n पे, कि आप दो नेचुरल नंबर लिया और उनको जोड़ा तो आपको जो एलिमेंट मिल रहा है नेचुरल नंबर ही है। सो प्लस ए बाइनरी ऑपरेशन n, बट माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन n, बिकॉज आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं नेचुरल नंबर सेट का, मान लो 2 comma 3 लिया, एंड इफ आई डू दिस ऑपरेशन से आई टेक ए नेचुरल नंबर सेट एंड से द ऑपरेशन माइनस, then if I take any element, any ordered pair of n, say I take 2 comma 3 and operate this minus operation, so it will give me what? It will give me 2 minus 3, but 2 minus 3 does not belong to this n. So minus is not a map from n cross n to n. ये n cross n to n का मैप नहीं है। माइनस जो है n क्रॉस n, it doesn't map every element of n cross n to n. No, if I take an ordered pair 2 comma 3, it doesn't map 2 comma 3 to n, because 2 comma 3 पे act करेगा minus sign, it will give me what? 2 minus 3, and 2 minus 3 is minus 1, which does not belong to n, right? So I can say that minus is not a binary operation on n. माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन n. माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इट डजंट मैप द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ n टू n. मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे
तो वो कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे तो मतलब कोई भी क्या मतलब सारे ऑर्डर पेयर को वो एलिमेंट ऑफ एन पे मैप नहीं कर, कुछ ऑर्डर पेयर को हो सकता है मैप कर दे, जैसे मान लो 3, 2 लो. So if minus operation acts on 3, 2, it gives me 3 - 2, which is 1, which belongs to n, right? Which belongs to n, but it does not map 2 - 3. 2 - 3 is -1, which does not belong to n. तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसा नहीं, कुछ ऑर्डर पेयर के लिए ट्रू है, कुछ ऑर्डर पेयर के लिए ट्रू नहीं है, तो उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन नहीं करा. इट मस्ट मैप एवरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n टू n. देखो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन का या कोई भी मैप का कोई भी फंक्शन आप लेते हो, मान लो एक फंक्शन, कोई फंक्शन है s को मैप कर रहा है टू एलिमेंट ऑफ से n, to element of say s dash. Suppose s is a set and if you have a function mapping element of s to s dash, right, then it has complete commitment over the element of s. डोमेन पे तो पूरा कमिटमेंट रहता है ना, हर एलिमेंट को मैप करेगा. ठीक है, तो अगर मान लो तो एक ऑपरेशन माइनस लिया है, ये 3, 2 को मैप कर रहा है, पर 2, 3 को मैप नहीं कर रहा, then it's not a binary operation. It should map every element of s cross s. It should map every element of s cross s to s. ठीक है, if it is not mapping any even a single element of n cross n, single element of s cross s to s, it's not a binary operation. कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया जिसको वो मैप नहीं कर पा रहा है, then that is not a binary operation. से प्लस है, वो कोई भी ऑर्डर पेयर को n पे जाके मैप करा, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उनको जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा. लेकिन इट्स नॉट ट्रू फॉर माइनस. मतलब आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लोगे तो उसको हमेशा वो n पे जाके मैप नहीं करेगा, उसको माइनस ऑपरेशन लगाएंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा. ठीक है, वो माइनस के वाले केस में इफ आई टेक टू नेचुरल a and b, then it will map to element of n only when a is more than b, right? Minus operation acting on a and b is a minus b, so it's a natural number only when a is more than b, right? So उस केस में minus is not a binary operation. Minus is not a binary operation. बल्कि minus अच्छा गुना है. Multiplication is a binary operation in it. If I take any two natural number, multiply them, I get a natural number. Right? If I take any two natural number, multiply them, I get a natural number. Multiplication is a binary operation. अगर मान लो ये multiplication operation acting on an ordered pair of n gives me what? A guna b, right? So in that case, this is a binary operation because this always belongs to n, right? If a and b belongs to n, then a multiplied into b will always belong to n. So multiplication is a good operation on set of natural number. Multiplication is a binary operation. तो natural number में देखो दो binary operation है. Natural number में दो binary operation है, एक तो addition है और दूसरा multiplication है. नेचुरल नंबर्स में दो बाइनरी ऑपरेशन आपका आ रहा है, एक तो एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन. इसका सिंपल मीनिंग ये है, इफ आई टेक एनी टू एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर सेट, ठीक, इफ आई टेक एनी टू नेचुरल नंबर, ऐड देम, आई गेट अ नेचुरल नंबर. सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन. सिमिलरली इफ आई टेक एनी टू नेचुरल नंबर, मल्टीप्लाई देम, if I take any two natural number, multiply them, I get a natural number. So I can say set of natural number is close with respect to the operation of multiplication. Set of natural number is close with respect to the operation of addition. Set of natural number is close with respect to the operation of multiplication. So addition and multiplication is a kind of binary operation on natural number. Binary operation on set of natural number. Similarly, if I take a say set of 2 cross 2 matrices, set of 2 cross 2 matrices, अगर मान लो हम एक set S ले, set of 2 cross 2 matrices, ठीक है. Then here also addition of the matrix, if I define addition of the matrix, right? If I define addition of the matrix, how we define it? If I take any two element, say what? I take say A, B, C, D, and then I take A dash, B dash, C dash, D dash. Then how you define addition?
It's defined something like this: A plus A dash, B plus B dash, C plus C dash, and D plus D dash. Then you can see that if these are individually belonging to set S, then this also belongs to S, right? So in that case, I can say for a set of 2 cross 2 matrices, addition is a binary operation, because if I pick any two 2 cross 2 matrices, add them. If I take any two 2 cross 2 matrices, add them, I get a 2 cross 2 matrix. So for a set of 2 cross 2 matrix, addition is a binary operation. For a set of 2 cross 2 matrix, addition is binary operation. Even for a set of 2 cross 2 matrix, multiplication is also a binary operation. You know how to multiply 2 matrices. I am not discussing it. For a set of 2 cross 2 matrices, even multiplication is also a binary operation. Even multiplication is also a binary operation. ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? The addition of matrix, it is a map from S cross S to S. मतलब कोई भी दो 2 cross 2 मैट्रिक्स लेंगे, ऐड करेंगे, you get an element of S. कोई भी दो 2 cross 2 मैट्रिक्स लेंगे, ऐड करेंगे, you get an element of S, right? So addition and multiplication is a kind of binary operation on this set of 2 cross 2 matrices. ठीक है? Or you can say set of 2 cross 2 matrix is closed with respect to the operation of addition and operation of multiplication. Right? In a similar fashion, set of natural number is closed with respect to the operation of addition and operation of multiplication. Okay. Set of natural number is closed with respect to the operation of addition and operation of multiplication. So you understand the binary operation. Binary operation on set S means what? If you pick any two element of S, अगर S का कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हैं, वो ऑपरेशन लगाते हैं उन दोनों एलिमेंट पे, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट मिलता है, अगर वो एलिमेंट भी S को बिलोंग करता है, then we can say that operation is binary operation S. If you take any non-empty set S, then and I define an operation star, then a star is set to a binary operation if I pick any two element of S and do this operation star, and if I get the resulting element, and if that resulting element belongs to the S itself, then we say that a star is a binary operation. Example, n is a set of natural number, and I pick any two natural number and do the operation of addition. After doing the operation of addition, I find that the natural number, if I add two natural number, I get this natural number, and that is I get a number which is natural number. Then I can say plus is binary operation, right? तो ऐसा लगेगा कि तो होता ही है, लेकिन ठीक है, मतलब इसको देखो, जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करना भी एक बड़ा चीज होता है. ठीक है, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यही सब पढ़ते हैं. मतलब आपको लगेगा क्वाइट ऑब्वियस है, बट नो, इट्स नॉट क्वाइट ऑब्वियस. वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट. ठीक है, ओके. अब आगे चलते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में वी हैव टू वेरी famous binary operation, that is one is operation of addition and another is operation of multiplication. Addition और multiplication दो काफ़ी famous binary operations है. अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मतलब यही दो binary operations है. binary operation और भी हम लोग बना सकते हैं. ये famous है जो हम लोग usually daily life में इसको करते हैं, but there can be several other binary operation. In fact, there can be infinitely many binary operations for the set of natural numbers. I'll tell you, थोड़ा सा अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि how you determine the number of binary operation which you can have on a set. किसी set पे number of binary operation कितने हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे. ठीक है, तो कुछ एक दो हम आपको binary operation कंस्ट्रक्ट करके दिखाते हैं कि नेचुरल नंबर से और कौन से बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स हमने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन तो इन्फिनिटी हो जाएगा नेचुरल नंबर सेट के लिए, बट आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन के अलावे भी बाइनरी ऑपरेशन होगा. वो थोड़ा सा आपको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं. सम बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. लेट मी टेल यू रिगार्डिंग सम बाइनरी ऑपरेशंस और एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स.
examples of binary operations on the set of natural numbers, which will be denoted by n. Okay. So the very first example I'll take is, you can have a binary operation like this. So the star is a binary operation such that A star B, we can have a binary operation star such that A star B, when star acts on the ordered pair A comma B, which is, it gives you A star B, and A star B is nothing but, say, maximum of this. So this is a binary operation. If A and B belongs to set of natural number, the maximum out of A and B will also belong to the set of natural number. Right? I can define a by, इस तरह से binary operation define किया हमने star, हमने एक star binary operation define किया, such that when a star acts on A comma B, it gives you A star B, and A star B is nothing but maximum of A B. जैसे मान लो A को ले लिया 2 और B को ले लिया 3, ठीक है, तो 2 star 3 will be what? Maximum of 2 and 3. Maximum out of 2 and 3 क्या है? 3 is the maximum. 2 और 3 में maximum कौन सा है? 3 है, ठीक है. So of course maximum of A and B will be either A or B, and both are natural number. So I can say this is a binary operation from set of, on the set of natural number. It takes element of the Cartesian product of n cross n to n. Right? So star is a binary operation, of course. अगर A और B natural number है, तो जो maximum of A और B होगा वो तो either A होगा और B होगा, जो बड़ा होगा वही होगा ना, वो भी natural number होगा. तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार है एक मैप है फ्रॉम सेट ऑफ कार्टेशियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n टू n. मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर पे एक्ट करता है और उसको मैप कर देता है एक नेचुरल नंबर पे, ठीक है. सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज वी डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन एज दिस काइंड ऑफ डॉट, राइट, सच दैट A dot B is A, first element. A dot B is A. ये भी बाइनरी ऑपरेशन है. मतलब if this dot acts on ordered pair of natural number, it gives you A dot B, and this is nothing but first element. A और B में जो first element, A जो है, A is the first element. So this is also a binary operation. अगर मान लो इसको हम 2,3 पे लगाते हैं, ये क्या देगा? 2 dot B, 2 dot 3, and it's nothing but 2. तो ये भी जो डॉट है ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, which takes the element of the Cartesian product of n to n, right? तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है. ऐसे ऐसे बड़े सारे बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हो. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Let me take one more example. Suppose we take a small delta, right, and define binary operation small delta such that A delta B is A to the power B. Of course, if A and B is a natural number, then A to the power B is also a natural number. A to the power B is also a natural number. ठीक है. A to the power B will also be a natural number. Just for example, I take delta acting on 2,3. So that gives you 2 delta 3 is nothing but 2 to the power 3, which is 8, right? So 2, 3 belongs to a natural number. 2 to the power 3 will also belong to a natural number. तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है.
it maps the element of set Cartesian product of n to n. ठीक है. So there can be various examples of binary operations. ठीक है. There can be many examples of binary operation. The other examples can be, say, LCM, SCF. We can define LCM also as the binary operation. LCM of two natural number is a natural number. LCM of two natural number is also a natural number. So LCM is a kind of binary operation. It acts on ordered pair A comma B, and that gives you LCM of AB, right? Even SCF is also binary operation. I take two numbers and do the operation of SCF. SCF of A comma B is giving you SCF of A and B, right? So SCF, LCM, they all are binary operation on set of natural numbers. तो बड़े सारे बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं. तो अगर मान लो कोई बोले कि बताओ कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस यू कैन हैव फॉर अ सेट ऑफ सम सेट, सम फाइनाइट सेट. ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है. नेचुरल नंबर तो तुम्हारा इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स होगा. बट इसको भी थोड़ा समझा जाए कि इनफाइनाइट सेट होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्यों होगा. पहले हम लोग लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए फाइनाइट सेट. लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए फाइनाइट सेट. ठीक है, इस पे कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट the number of binary operations on a finite set. Number of binary operations on a finite set. पहले तो ये समझो कि if suppose A and B are two sets, let A and B are two non-empty set, non-empty finite set, such that the cardinality of A is n and cardinality of B is m. कहने का मतलब है A के अंदर n एलिमेंट्स हैं, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और B के अंदर m एलिमेंट्स हैं. A के अंदर n एलिमेंट्स हैं और B के अंदर m एलिमेंट्स हैं. Now if I want to calculate the number of maps which you can have between A and B, अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि कितने मैप हो सकते हैं, कितने फंक्शंस हो सकते हैं, हाउ मेनी मैप्स यू कैन हैव फ्रॉम A and B. ये मैप क्या कर रहा है, ये A के एलिमेंट को B के एलिमेंट पे जाके मैप कर रहा है, A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट पे जाके मैप कर रहा है. It is mapping the element of A to the element of B, right? Okay. Now, the number of element over here is n. The number of element over here is m. अब जब मैपिंग डिफाइन करेंगे तो when you map each element of A, how many ways you can map each element of A? A का एक एलिमेंट को कितने तरीके से मैप कर सकते हो, एक के एलिमेंट्स को कितने तरीके से मैप कर सकते हो. फॉर ईच एलिमेंट हाउ मेनी कैंडिडेट्स यू हैव फॉर दैट एलिमेंट टू बी मैप्ड अपॉन. एक एलिमेंट को कितने तरीके से मैप कर सकते हो, एक एलिमेंट को आप m तरीके से मैप कर सकते हो. यू कैन मैप ईच एलिमेंट इन m वेज, क्योंकि m नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ है, यहाँ पे n पिजन है तो यहाँ पे m होल्स है, नहीं यहाँ पे n पिजन है तो यहाँ पे m होल्स है. आप पिजन होल प्रिंसिपल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे हम बताएंगे आपको. n पिजन्स है तो m होल्स हैं. ठीक है, और सारे पिजन एक होल में रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ठीक है,
तो एक एक पिजन के लिए कितने होल्स सामने वाले सेट में है? m होल्स हैं। एक एक पिजन के लिए यू हैव m होल्स, m पॉसिबिलिटी वेयर द पिजन कैन रिसाइड। ठीक है, फॉर ईच पिजन यू हैव m पॉसिबिलिटी वेयर दे कैन रिसाइड। ठीक है, तो फॉर ईच एलिमेंट यू हैव m वेज ऑफ मैपिंग इट, राइट। एक एक एलिमेंट m वेज में मैप हो सकता है। So you can map the first element in m ways, second element in m ways, third element in m ways and so on. कितने हो जाएंगे? n terms, क्योंकि n elements एक है। So number of possible maps from A to B will be what? Will be equal to m to the power n. M is the cardinality of B and n is cardinality of A. अच्छा, ठीक, ये तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का बात करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? इफ आई टॉक अबाउट बाइनरी ऑपरेशन ऑन S, suppose S is a finite set. Let S is a finite set. Let S be a non-empty set of cardinality. Cardinality means number of elements. Cardinality n, तो n एलिमेंट्स है। अब कोई अगर बाइनरी ऑपरेशन का बात करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? इट इज ए मैप फ्रॉम S क्रॉस S टू S। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए फाइनाइट सेट विल बी हाउ मच? देखो वहां पे कार्डिनलिटी ऑफ B अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ B रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। तो यहाँ पे ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। ठीक है, तो B में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। और A में कितने एलिमेंट हो गया भाई? S क्रॉस S, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ S। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना हो जाएगा भाई? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर S क्रॉस S लोगे, you can choose A in n ways and B in n ways. So you have n squared ordered pairs, right? So it would be n to the power n square. N to the power n square. This will be number of binary operations. ठीक है, तो अगर मान लो if the cardinality of S is 2, then the number of binary operation will be how much? 2 to the power 2 square. मतलब 2 to the power 4, 16 बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इफ यू हैव सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दैट सेट इज गोइंग टू बी 16। अगर 3 एलिमेंट का सेट होगा तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विल बी हाउ मच? 3 to the power this and this is 3 to the power 27। तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा नहीं यार? देखिए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विद 3 to the power 27। माय गॉड, 3 to the power ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा नंबर हो गया। लॉट्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना? या सो यू हैव गुड नंबर ऑफ sorry नहीं n स्क्वायर था यार। ओहो सॉरी, इट्स नॉट सो हाई। 3 स्क्वायर नॉट क्यूब। 3 to the power 3 स्क्वायर मतलब 3 to the power 9, फिर भी बहुत ज्यादा है। 3 to the power 9 19683, बहुत ज्यादा है नहीं? और 4 एलिमेंट का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? 4 एलिमेंट सेट में तो यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नहीं मतलब यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में, तो बहुत सारे हो गए नहीं?
लॉट्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, 3 एलिमेंट सेट है तो उसमें इतने पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे। 2 नंबर सेट पे 16 बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे, 16 बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे, नहीं? ओके, ठीक है। सो वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फॉर द फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो, एन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, एन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए, लेट मी डिफाइन ए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से। हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया है, ठीक है। अभी बाइनरी ऑपरेशन पर और बात करेंगे हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन पर और बात करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग अहेड लेट मी डिफाइन ए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रुपॉइड। A algebraic structure, a algebraic system with a binary operation star defined on it is called groupoid. So you can say that n this multiplication LCM look at lots of groupoid or etc are all groupoid. Are all groupoid, ठीक, ये सब groupoid है, ठीक है। So groupoid is very simple algebraic structure where you have just a non-empty set and a binary operation defined on it. A non-empty set with binary operation defined on it that forms an algebraic structure called groupoid. देखो abstract algebra is all about studying different algebraic structure, ठीक है। तो सिंपल एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे एक नॉन एम्प्टी सेट पे, नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद दैट बाइनरी ऑपरेशन विल बी कॉल्ड ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। सी देयर आर बाइनरी ऑपरेशन व्हिच आर कम्यूटेटिव। कहने का मतलब ये है व्हेन स्टार एक्ट्स ऑन a comma b, so the result you get is same as when it acts on b comma a. Star is a binary operation, and if it acts on a comma b and if it acts on b comma a, if they give you same result, then we call that star as commutative binary operation. Means a star b is b star a, then you call that star binary operation as commutative binary operation. For example, ये देखो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, 2 + 3 is 3 + 2, 2 + 3 is 3 + 2. Addition is commutative binary operation. Addition is commutative binary operation. Even this is also, multiplication is also commutative binary operation. Multiplication is also commutative binary operation. So binary operation on a set can be commutative. It's not always. It's not always. जैसे अभी लास्ट जो एग्जांपल्स लिए थे वो यहाँ देखिए, अगर ये 2 स्टार 3 करो या 3 स्टार 2 करो, that gives you what maximum star a star b is maximum of a comma b, so that is commutative. Maximum of 2 comma 3 और maximum of 3 comma 2 is again 3 only, ठीक है। maximum of a comma b and maximum of b comma a is same thing. तो यहाँ पे जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है कम्यूटेटिव है, but what about this dot? 2.3 is 2, but 3.2 is 3. भाई a dot b क्या है, पहला एलिमेंट a dot b is a. So अगर यहाँ पे हम कहें
2.3. 2.3 will be the first element 2. But what will be 3.2? 3.2 will be 3. 2.3 is 2, 3.3 is 3. So यहाँ पे ये commutative binary operation नहीं है. This is not commutative binary operation, right? What about this? Even this is also not commutative binary operation. 2 delta 3 is 2 to the power 3. 3 delta 2 will be what? 3 delta 2 क्या हो जाएगा? 3 to the power 2. और 3 to the power 2 क्या हो जाएगा? 9. 2 to the power 3 क्या हो गया? 8. So delta is not a commutative binary operation. Delta commutative binary operation नहीं है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसमें स्टार तो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन डेल्टा वाला जो है वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. समझ रहे हैं आप? कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. ठीक. अब अगर आपसे पूछे कि भाई कोई सेट एस दिया हुआ है तो उसमें आप बता दो मुझे कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे. बाइनरी ऑपरेशन का तो संख्या हम लोग निकाल लिए, n to the power n स्क्वायर. अगर s का कार्डिनलिटी n है तो बट अगर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का आपसे पूछ दिया तब कैसे करोगे? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? इट इज मैप फ्रॉम s क्रॉस s टू s. कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या है? कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन वो बाइनरी ऑपरेशन सच दैट a स्टार b इज b स्टार a. मतलब स्टार एक्टिंग ऑन a कॉमा b एंड स्टार एक्टिंग ऑन b कॉमा a. स्टार जो है a कॉमा b और b कॉमा a को सेम एलिमेंट पे जाके मैप कर रहा है. स्टार इज मैपिंग a कॉमा b एंड b कॉमा a टू द सेम एलिमेंट ऑफ s. सेम एलिमेंट ऑफ s. ठीक है. स्टार जो है वो a कॉमा b और b कॉमा a को सेम एलिमेंट पे जाके मैप कर रहा है. ठीक है. ओके. अगर हम कहें s में n एलिमेंट है, if s has got n एलिमेंट, if s has got n एलिमेंट, ठीक है, तो s क्रॉस n में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? n स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे. अब इस n स्क्वायर एलिमेंट को अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स में सजा दें, n क्रॉस n मैट्रिक्स में सजा दें इसको. अब पहला एलिमेंट n एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट टुगेदर विद द फर्स्ट एलिमेंट विल फॉर्म A11. एलिमेंट्स का हम लोग लेबलिंग इस टाइप से कर दें, इस टाइप से हम लोग लेबलिंग कर दिया जाए. सो और यू कैन से देयर इज अ बाइजेक्शन between S cross S and N cross N matrix? नहीं. We can define a bijection, a bijective map from S cross S to a N cross N matrix. We can always define a bijective map from S cross S to N cross N matrix. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम लोग जो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा वो ऐसा बाइनरी ऑपरेशन होगा जो aij और aj को सेम जगह जाके मैप कर रहा है. aij और aj को सेम जगह जाके मैप कर रहा है. ठीक है. तो आपका फ्रीडम जो है मैप करने का इन एलिमेंट्स, अगर एक बार इसको मैप कर दिए देन यू हैव नो ऑप्शन ऑफ मैपिंग दिस. जहां इसको मैप करोगे यहां इसको मैप करोगे. मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को एक बार आप मैप कर देते हैं तो नीचे वाले एलिमेंट में कोई आपके पास फ्रीडम नहीं है. द वे यू मैप aij, जहां पे aij को मैप करेंगे वहीं aj को भी मैप करेंगे आप. राइट. तो एक तरह से आपको फ्रीडम जो है इसमें कितने एलिमेंट को मैप करने का है. अच्छा, इधर आपका s है, इनको s के एलिमेंट पे मैप करा जहां पे n एलिमेंट्स है. और यहाँ पे फ्रीडम कितने एलिमेंट को मैप करने का है बताओ जरा. टोटल एलिमेंट कितने हो गए? n स्क्वायर. अब फ्रीडम कितने एलिमेंट को मैप करने का है? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल के ऊपर वाले या डायगोनल के नीचे वाले. अगर डायगोनल के नीचे वाले को मैप कर दे डायगोनल के ऊपर वाले भी वहीं जाके मैप होंगे. तो नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको आप इंडिपेंडेंटली मैप कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट s के किसी भी एलिमेंट, वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर हो गया. और इन एलिमेंट की संख्या कितना होगा बताओ भाई. नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपका कितना हो गया? n स्क्वायर माइनस n.
ठीक है, n स्क्वायर माइनस एन, सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट n हो गया, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट का संख्या कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस एन। अब डायगोनल के ऊपर कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस एन बाई टू, और डायगोनल के नीचे कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो डायगोनल के ऊपर वाले को मैप कर दोगे तो डायगोनल के नीचे वाले को वहीं जाके मैप करना पड़ेगा जहां डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को मैप किए हो, ठीक है। तो आपको जो टोटल संख्या, टोटल एलिमेंट जिसको आप इंडिपेंडेंटली मैप कर सकते हो, दैट इज हाउ मच, n स्क्वायर इज द टोटल एलिमेंट, और n स्क्वायर माइनस एन बाई टू घटाना पड़ेगा कि इतने एलिमेंट को आप इंडिपेंडेंटली मैप नहीं कर सकते हो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू कैन इंडिपेंडेंटली मैप ऑन द एलिमेंट ऑफ s, मतलब एक एक एलिमेंट के लिए n ऑप्शन आपको रहेगा, दैट विल बी दिस। ये कितना आ जाएगा जरा देखो, जरा नहीं समझ में आया तो पूछना, थोड़ा दिमाग लगाना आप भी, ठीक है। इतने एलिमेंट को आप इंडिपेंडेंटली मैप कर सकते हो, ठीक। आइए इधर n है, तो एक तरह से द नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज that will be how much, n to the power this, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कहीं पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। दिस इज नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कॉम्यूटेटिव, इट मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव। जैसे 2x2 मैट्रिक्स का आप अगर सेट ले लें, इफ आई टेक सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस and I talk about the multiplication as the binary operation, ठीक है। तो multiplication of matrices are not commutative, a into b is not always b into a, so multiplication as the binary operation on a set of 2x2 matrix is not commutative, commutative नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और समझिए, जितना बाइनरी ऑपरेशन पे रेस्ट्रिक्शन डालते जाएंगे, जितना आप बाइनरी ऑपरेशन रेस्ट्रिक्शन डालते जाएंगे, नंबर ऑफ दोज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। जैसे आप देखिए, अगर सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स का बात करते हैं, सो नंबर ऑफ ग्रुपॉइड विच कैन बी मेड आउट ऑफ दिस सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, मतलब सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स में आप इतने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो, तो कितने ग्रुपॉइड बन जाएंगे आउट ऑफ दिस सेट ऑफ 3 एलिमेंट, एस स्टार, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन। तो एक ही सेट पे देखो, एक चीज समझो आप यहाँ पे कि यहाँ पे सेट सब सेम है, ठीक है, n है, लेकिन अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो ये अलग अलग ग्रुपॉइड बनेगा। n प्लस इज वन ग्रुपॉइड, n डॉट इज अनदर ग्रुपॉइड, n LCM इज अनदर ग्रुपॉइड। So groupoid is not just a set, it is set equipped with a binary operation. So if you have different binary operation, we can have different groupoid. So a non-empty set equipped with a binary operation forms a groupoid. तो आप देखिए यहाँ पे, मतलब if I take a set of 3 elements, then out of this set of 3 elements I can have these number of groupoids. But अगर हम बात करें कि I want a groupoid where the binary operation is commutative, the number of such groupoid falls down. n to the power n square है। अगर हम बात करें कि how many groupoid you have, मतलब set of 2 elements है, so how many groupoid you have where the binary operation is commutative। अगर हम लोग बात करें set of 2 element का, तो if I put n equal to 2, it will be what, 2 square plus 2 upon 2, so this will give me what, to the power, अच्छा, to the power 3, नहीं, 4 plus 2, so it is 8। तो आप देखो number of groupoid is 16 for the set of 2 element, और उसमें number of groupoid where the binary operation is commutative will be simply 8। तो जितना restriction, जितना rich करते जाओगे ऑपरेशन को, उतना वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का संख्या कम होता जाएगा। मतलब number of groupoid made out of set of 2 element is 16, but those groupoid where the binary operation is commutative is just 8, हाफ हो गया ना, सिर्फ हाफ हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक, अब एक और ऑपरेशन का बात करेंगे हम लोग, विल टॉक अबाउट वन मोर ऑपरेशन, दैट इज एसोसिएटिविटी।
of एसोसिएटिविटी बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टी है, समझिए बात को, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। एसोसिएटिविटी बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टी है। कुछ बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी सेट पे ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, is said to be associative if a binary operation or set of non-empty set is said to be associative if A star B star C for all, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, if I talk about this groupoid, तो यहाँ पे जो एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑपरेशन ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एसोसिएटिव। If I take 3 natural number A, B and C, then of course we have this. So addition is associative. In the same way, multiplication is also associative on the set of natural number. Multiplication is also associative on the set of natural number. Multiplication भी associative है. If I take about set of integers and talk about addition, associative. It is associative. Addition is associative on the set of integers. But what about subtraction? Subtraction, of course, is a binary operation on subtraction is a binary operation on set of integers. Subtraction is not a binary operation set of natural number. Subtraction जो है वो natural number set के लिए binary operation नहीं है, लेकिन इंटीजर्स के लिए वो बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब इफ आई टेक 2 इंटीजर्स a comma b, then a minus b will also be integer, right? Same thing I cannot say for natural number. If I take 2 natural number a comma b belonging to n, then a minus b may not be a natural number. But I can say this thing for integers. अगर 2 integers लेते हैं a comma b, ठीक है, a and b are 2 integers, then a minus b will also be integer. a minus b will also be integer, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एडिशन जो है एसोसिएटिव है, इंटीजर एडिशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स। कैन आई से द सेम थिंग फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो? सब्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स ए बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर्स, बट कैन आई से कि सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर्स? Can I say subtraction is associative binary operation set of integers? Can I say this? A minus B minus C is A minus B minus C. Is it so? No, it's not so. This doesn't hold. If I take three numbers, 3 integers, and I do this, will it be equal to this? No. This is minus 5. What's this? This is 3. This is 3. So subtraction is not an associative binary operation on a set of integer. So if I talk about richness of the binary operation, then I can say that subtraction is not a very rich binary operation. सब्ट्रैक्शन कोई बहुत रिच बाइनरी ऑपरेशन है। रिच मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉपर्टी आ रहा है उतना वो रिच हो रहा है ना। एडिशन इज ए रिच बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन। एडिशन इज ए रिच बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स।
एडिशन एक रिच बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, राइट। एडिशन इज ए रिच बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए वेरी रिच बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बाद और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इवन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन देखो, इफ आई टेक अबाउट सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एडिशन एक रिच बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि इसके बड़े सारे और भी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये एडिशन जो है एसोसिएटिव है, एडिशन जो है कम्यूटेटिव है, ठीक है, पर सब्ट्रैक्शन नहीं। सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन जरूर है, लेकिन वो बहुत रिच बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बहुत रिच बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अगर फिर से वापस हम लोग यहाँ पे आ जाएं कि हाउ मेनी ग्रुपॉइड यू कैन हैव ऑन ए सेट ऑफ से three element set. The number of groupoid for a 3 element set will be this much, 19683. अच्छा, और भी एग्जाम्पल देख सकते थे एसोसिएटिविटी का, इधर भी देख सकते हो। अगर स्टार की बात करें, स्टार इज एसोसिएटिव ऑफ कोर्स। ए बी सी, द मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब अगर लेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ ए बी सी, मतलब अगर तीन ऐसे लें, A star B star C will be how much? A star B star C. So this is maximum of A star B C, and this is maximum of, right? So this is what? Maximum of ultimately क्या है? Ultimately this is nothing but maximum of A, B and C. Out of A, B, C जो maximum है, ये भी वही चीज है। So I can say star is associative binary operation. Star is a associative binary operation. Can I say the same thing for dot? If I take 2.3.4, what will be this? This will be 2.4 and this is 2. Can I say, what do I say about this? This is, yes, dot is also associative binary operation. Dot is not commutative, but dot is associative binary operation. Dot is associative binary operation. सिर्फ एक एग्जांपल लेके हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी समझ में आ रहा है कि अगर इन जनरल ही बात करेंगे हम लोग, if I talk about in general also, then A dot B dot C is how much? This is A dot C, this is A. अगर A dot B dot C लें तो क्या हो जाएगा? A dot B and this is A. So dot is also associative binary operation. Dot is also associative binary operation. What about delta? What about delta? 2 delta 3 delta 4 is how much? 2 to the power 3 delta 4, or this is 8 to the power 4, right? If I talk about this, so this is 2 delta 3 to the power 4 is 2 to the power 81. ये अलग हो गया ना, ये अलग हो जाएगा, right? So delta is not associative binary operation. Delta is not associative binary operation. Delta associative binary operation नहीं है, ठीक है? So okay, इसको हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी का अगर बात करें तो फॉर ए 3 एलिमेंट सेट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 19683. But if I talk about number of associative binary operation, how many binary operation on a 3 element set will be associative? Number of associative binary operations कितने होंगे?
इसका कैलकुलेशन तो यहाँ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट पीपल हैव डन इट, द ग्रेट पीपल हैव डन इट. So if I talk about number of associative binary operation, on 3 element set, they have calculated it to be 113. नहीं, बहुत कम हो गया. मतलब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 3 element set is 19683. Number of associative binary number of binary operation on 3 element set is 19683. But if I put a condition, what is number of associative binary operation set of 3 element? It comes to be simply 113. It comes out to be simply 113. 113 ही उसमें associative है, 113 ही उसमें associative है, ठीक है. 113 बाइनरी ऑपरेशंस ही उसमें एसोसिएटिव निकल के आ रहे हैं. तो इसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फॉर ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स और ए for a 3 element set as the number of groupoid which you have is 19683. Number of groupoid is 19683. But the groupoid where binary operation is associative is simply 113. नहीं, and you call such groupoid as, इस तरह के groupoid को आप you call it semi group. So out of 3 element set, you have simply 113 semi group. नहीं, तो जितना आप richness बढ़ाते जाएंगे, number of algebraic structure will keep on falling. ठीक है, मतलब out of 3 element set, number of groupoid where the binary operation associated, which we call semi group. Number of semi group which can be made out of 3 element set is simply 113. 113 ही ऐसे ग्रुपॉइड है जहां बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, ठीक है, जहां बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है. तो कहने का मतलब यह है कि द नंबर ऑफ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज वेरी लेस कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. Number of associative binary operation is very less compared to number of binary operation. If I define something like this, say the number of associative binary operations, say call it AN, and total number of binary operations BN, and if I take the ratio CN, then CN is very less as N goes higher. अभी N आपका 3 है, then Cn is what? Cn is for n equals to 3. Cn is how much? 113 बटा, and this Cn rapidly falls as n increases. Cn rapidly falls as n increases. That means the limit when n goes to infinity, as n increases, this ratio keeps on falling, right? The ratio keeps on falling. ठीक है, तो ठीक है, मतलब इतना नहीं जरूरत है, ठीक है, ओके. और ये हम इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो n इक्वल 3 के लिए देखो सेमी ग्रुप 113 है, और यही कैलकुलेशन अगर हम कहें सेमी ग्रुप फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 की अगर बात करें तो यही संख्या जो है n इक्वल टू 2 में कितने बाइनरी ऑपरेशंस हैं? 16 बाइनरी ऑपरेशंस हैं. तो नंबर ऑफ ग्रुपॉइड
made out of set of 2 element where the binary operation associative is 8, मतलब 16 ग्रुपॉइड में 8 ग्रुपॉइड ऐसे हैं जो सेमी ग्रुप हैं फॉर द सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। और यही अगर हम लोग 3 एलिमेंट सेट का बात करें तो आउट ऑफ 19683 ग्रुपॉइड ओनली 113 इज सेमी ग्रुप। मतलब ये रेशियो का अगर बात करें Cn का, तो Cn तुम्हारा when n is 3, मतलब C3 कितना हो जाएगा, दिस इज C3 राइट, n is 3। तो ये अगर परसेंटेज का बात करते हैं तो 113 भागा 19683 ये आ जा रहा है करीब 0.6%। और यही आपका जो 2 एलिमेंट सेट के लिए ये आ जा रहा है 50%। तो आप देख सकते हैं जब n इक्वल टू 2 है, जो 2 एलिमेंट का सेट है, तो 50% ग्रुपॉइड जो है सेमी ग्रुप है। बट अगर हम लोग 3 एलिमेंट सेट का बात करें तो ओनली 0.6% ग्रुपॉइड इज सेमी ग्रुप, only 0.6% groupoid is semi-group. So as the richness of the binary operation increases, the number of algebraic structure falls very rapidly. यही n equal to 4 कर देंगे तो ये और भी कम हो जाएगा। When n goes very large, this limit goes to 0. मतलब negligibly small number of negligibly small percentage of groupoid will be semi-group. ठीक है। और आगे अगर देखें, अभी तक तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टी देख रहे थे। एसोसिएटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव फिर आपका वो जो कम्यूटेटिविटी इज द कम्यूटेटिविटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। अब एडिशन एसोसिएटिव है तो एडिशन चाहे नेचुरल नंबर सेट पर डिफाइन कीजिए, सेट ऑफ मैट्रिसेस पे डिफाइन कीजिए, या सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन कीजिए, या सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन करो। एडिशन एसोसिएटिव है तो हर जगह एसोसिएटिव है। अगर एडिशन आपका मतलब कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में कम्यूटेटिव है, सेट ऑफ इंटीजर्स में कम्यूटेटिव है। बट कुछ प्रॉपर्टी जो है मतलब ऑपरेशंस करना होके कुछ प्रॉपर्टी सेट के अंदर होता है कोरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन ऑपरेशन। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच बिलोंग्स टू ए सेट कोरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन ऑपरेशन, एंड वी हैव 2 सच प्रॉपर्टी। एक तो प्रॉपर्टी हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। द एलिमेंट E belonging to a set S equipped with binary operation star is said to be an identity element corresponding to a given operation if for all A belonging to S, A star E is E star A is A, right? This is called identity element. जैसे if I take set of natural number or set of integers, if I take set of integers and take the operation addition, then you can say the identity element is 0, because if I take any element A belonging to set of integer, then A plus 0 is 0 plus A is A for all A belonging to Z. But यही अगर ऑपरेशन चेंज कर दें आप, if I take multiplication as the binary operation, your identity element will go to 1, right? Because A into 1 is 1 into A is A for all A belonging to Z. तो देखो जो इंटीजर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है
वो सेट का ही प्रॉपर्टी है और बाइनरी ऑपरेशन का ही प्रॉपर्टी है. इट इज ए एलिमेंट बिलोंगिंग टू एस and depending on the operation that identity element will change. ठीक है. If I talk about set of integers, we are considering two binary operation, addition and multiplication. The corresponding to addition, the identity element is 0. Corresponding to multiplication, the identity element is 1. अगर set of natural number का बात करें तो उस केस में नेचुरल नंबर में दो बाइनरी ऑपरेशंस, फेमस बाइनरी ऑपरेशन कंसिडर करते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है. कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर में जोड़ा जाए तो वही नंबर आ जाएगा. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. वही अगर इंटीजर में बात करें तो यू हैव टू बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मतलब और भी होंगे, मतलब दो बाइनरी फेमस बाइनरी ऑपरेशन है. एंड वी हैव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बोथ द ऑपरेशन. ठीक है. और दूसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ही यूनिक होता है. द प्रूफ इज वेरी सिंपल, आप देख सकते हो, कर सकते हो खुद से. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सेट corresponding to a given binary operation is always unique. मतलब एडिशन के लिए एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, या मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता. एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है. आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक. आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक और ये पूरे सेट को बिलोंग करता है. ठीक है. फॉर एवरी एलिमेंट ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए. राइट. समझ में आ रहा है चाहिए आपको? अच्छा. एंड कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? सेमी ग्रुप तक आए थे ना. मतलब ए ग्रुपॉइड वेयर द बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव इज कॉल्ड सेमी ग्रुप. राइट. अब सेमी ग्रुप विच कंटेन्स आइडेंटिटी, a semi group which contains identity, a semi group which contains identity is called monoid. Is called monoid. Semi group which contains identity is called monoid. Suppose natural number with multiplication as the binary operation is a monoid. ये monoid, ये एक monoid है, right? Z plus is monoid, Z dot is also monoid. ठीक है, called monoid. Now, there is one more thing which I'll add. In some monoid, you have a property which is called inverse. Let me talk about this. Existence of inverse. Right. A set is a non-empty set equipped with a binary operation. A non-empty set S star, where star is the binary operation, is supposed to possess inverse if for every element A belonging to S, there exists for every element, for every element A belonging to S, there exists element B belonging to S such that A star B is B star A equals to identity. And we call B as inverse of A. We call B as inverse of A. B as inverse of A. This is, for example, if I talk about this operation, then for every element A belonging to Z, you have element minus A belonging to Z such that A minus A is identity, which is 0.
But same thing is not true for this multiplication operation. For multiplication operation, I can't say this. Matlab, for every element A belonging to Z, I don't have something like 1 by A. 1 by A need not be an integer. It's integer only when A is 1 or minus 1, right? It's integer only when you have 1 or minus 1. Okay, so I don't have for every element A belonging to Z 1 by A such that A into 1 by A is 1. 1 is the identity element. Okay, so this is not true for multiplication operation. So for multiplication it remains monoid only, right? But for addition it is more than monoid. For addition it is more than a monoid, not just identity. It has got inverse for every element. Actually, inverse for, you have inverse for every element, right? Identity for a set, but inverse for an element. And inverse of every element is unique also. This thing can be proved very easily. Inverse of every element is unique. तो अगर किसी मोनाइड में हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर किसी मोनाइड में हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर किसी मोनाइड में हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे मोनाइड को हम लोग we call it a, what we call, if there exists an inverse for every element of a monoid, then we call the monoid as what? We call monoid as what? Group. We call that monoid as group. That's all what the subject is, right? So a group is an algebraic structure. A group, a non-empty set. Let's define what is group. A non-empty set S equipped with a binary operation star is said to be a group. Is said to be a group if it satisfies following property. A dot, पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है associativity. What is associativity? For all A, B, C belonging to S, or now call it G. अब इसको G बोलो, right? S नहीं लिखो. Let's call it G. A star B, the way you associate them doesn't make a difference. This. Second property, of course binary operation है ये, तो closure लिखने का कोई जरूरत नहीं है. This is binary operation equipped with a binary operation star. So associativity. Second is existence of identity. There exists A or E belonging to G such that for all A belonging to G, A star E is E star A is A. That is existence of identity. Third is existence of inverses. For every A belonging to G, there exists some element B belonging to G such that A star B is B star A equals to E, right? So it's a group. So I can say that is a group.
Nice example. It's a group. Z dot is a monoid, doesn't? It's not a group. It's not a group. ठीक है? Z dot जो है, even is not a group. Is a monoid. What about this? It is also not a group. It's also not a group, right? In fact, इसमें तो inverse भी नहीं है. इसमें inverse भी नहीं है. मतलब identity है, identity है. Inverse cases है, right? Okay. Semi group, right? Not semi group. Doesn't have inverses. Monoid, right? What else? You can have a set of 2 cross 2 matrices. Set of 2 cross 2 matrices, or set of n cross n matrices, say M2R, where you have real entries. Set of 2 cross 2 matrices with addition as the operation. It's a group. इसमें associativity भी है, identity भी है, zero matrix, inverses भी है. They are also group, right? There are certain group. ग्रुप के यहाँ तो बहुत बात करेंगे आगे, पूरा सब्जेक्ट ही ग्रुप थ्योरी के बारे में है. There are certain group where you have the operation is commutative. There are certain group where the operation is commutative. A star B is B star A for all A belonging to G or A B belonging to G. So if group is commutative, then it is called abelian group. Sorry, operation is commutative. If the operation is commutative, if the binary operation star is commutative, this is called abelian group or commutative. It's called abelian group or commutative groups. This is abelian group in fact. A plus B is B plus A. Hold good. Even this is also abelian group. So, ठीक है. So that's all about introduction. How we reach group. ग्रुप तक कैसे पहुंचते हैं, इसका पूरा जर्नी इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉपर्टीज और उसके बाद फिर कुछ सेट के प्रॉपर्टीज को लेके एक रिच अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं. ग्रुप इज अ वेरी रिच काइंड ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ग्रुप इज अ वेरी रिच काइंड ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. सो एंड द रिचनेस is seen in terms of these properties. The richness of group can be seen by these properties. ठीक है. Okay, so let me stop over here. आगे हम लोग ग्रुप के बारे में और पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप का ग्रुप पढ़ेंगे. पूरा सब्जेक्ट ही ग्रुप थ्योरी पे है, ग्रुप के बारे में है, तो हम लोग काफ़ी स्टडी करेंगे डिटेल में इसको. ठीक है. So I'll stop over here. Thank you very much and have a good day.